So in asset side, next one is now leasehold building. Okay, leasehold building. Okay, leasehold building means suppose if we take any building on rent. Okay, and it is for 5 years, 10 years, 15 years, and all 10 years or 15 years rent we are paying at present. Okay, so that as property is called leasehold building. Okay, it means that uh, the advance lease of 5 to 10 years we are giving in advance. Okay, so that property is called leasehold assets. Okay, so that's why it is recorded asset side. Next one is now machinery. Okay, machinery means any machine purchase for business use. Okay, so that is our assets. So that's why it is recorded on asset side. Same thing furniture. If companies made furniture, okay, in offices or in factory. Okay, so all are the assets for the company. So that's why it's recorded on asset side. Okay. Next one is now patent. Okay. Suppose company made patent of its own product. Okay. So that is assets for the company. And patent is the intangible assets. It is record always on balance sheet asset side. Okay. Next one is now trademark. Trademark is not an easy task. Okay. For purchasing trademark, you have to fulfill many points. After completing that points, you will get trademark. Okay. So trademark, once we take trademark, our sales will increase. So that's why it is a assets for the company. So it is record on asset side. Okay. Next one is now copyright. If you are taking rights against manufacturing styles of other companies, okay, against that you have to pay money. So that is assets for the company. So that's why it is record on asset side. Vehicles, livestock, all these are the assets. Okay, livestock means now that you have to directly sell assets in the market without doing any further production activity. Okay, that is called livestock. If livestock sell in the market, so money comes in. So livestock is the assets for the company because there is no further manufacturing process is done on that product. Okay, and directly sell in the market. So livestock is the assets for the company. So that's why they call on asset side. After that, vehicles, if any vehicles purchased by the company under the name of behalf of company's name, so that all the vehicles are assets for the company. So that's why it is recorded on asset side vehicles. Next one is now loose tools. Loose tools means the loose tools means, for example, कि suppose person is running garage. Okay, so all that pockets and is called loose tools for him. Okay, so same thing if companies operating big machines. Okay, and the tools are given by the machinery company. That tools is called loose tools. Okay, इसका मतलब ये है कि जो बड़ा मशीन से उसके जो किट होती है उसको ओपन करने की और उसको क्लोज करने की रिपेयर करने की that kit is called loose tools. Okay. Next one is now government securities. Okay. Government securities means government also selling securities. If you purchase that securities, that is assets for us in one kind of investment. Okay, so that's why it is a record on balance sheet asset side. Okay. Next one is now provident fund investment. Provident fund investment means provident fund is liability for the company. So against that, company has done some investment against provident fund. That is called provident fund investment. Okay, because to pay the liability, to pay the burden against that, the government do plan to uh, to earn income from some investment. So that's why the companies open new account and invest in some schemes. Okay, against that, the company received money for the payment of provident fund. So that's why that investment is called provident fund investment. Okay. Next one is now invest investment in shares, debentures and bonds. Okay.
investment in shares, debentures, and bonds. It means that if companies purchasing shares of other companies, okay, that is also recorded here. If company purchasing debenture of other companies, that is also recorded here. And company purchasing bonds, okay, government bonds, okay, that is also one type of investments, and that should be recorded balance sheet asset side, okay. Next one is now current assets, okay. So first of all, we discuss fixed assets. After that, we go for current assets. Now, what is the main difference between fixed assets and current assets? The main difference is that the benefit of assets we received less than 12 months is called current assets. Okay. And the benefit of assets received more than 12 months is called fixed assets. Okay. So in current assets, first one is closing stock. Okay. First one is closing stock. So stock which is ready in the godown, okay, in the form of raw material, in the form of finished goods, in the form of livestock, okay, that is called closing stock, okay. So end of the year on 31st March, whatever stock we have, that is called closing stock. Sunday debtors means we are selling the goods on credit to the customers. That customer is called debtors, okay. So, in business, there is no one customers. Okay, there are many customers. Okay, when we are selling goods to our customers on credit, it's called debtors. Okay. Next one is now cash balance, bank balance. Okay, cash balance means whatever balance we have on our hand in form of cash. That is called cash balance. Okay. So at end of the year, whatever cash balance we have on 31st March. Okay. So that is called cash balance. Same thing in our current account. Whatever the closing balance we have on 31st March, that is our bank balance. So both are the assets for the company, and that's what is recorded on balance sheet asset side. Okay. Next one is now stores and spare parts, income receivables. Stores and spare parts means whatever goods we have in stores, spare parts. Okay, that is the assets for the company. So that's why it's recorded on balance sheet asset side. After that, income receivable. Income receivable means income of the current year is not received. It's called income receivable. Example is suppose any property is giving on rent, okay, but the rent of the last 2 months is not received. It's called outstanding rent, okay. That's called income receivable also, okay. The next one is loan, okay. If company is giving loan to any employee or some friends or some companies, okay, it is recorded here. That is called loan line. Bill receivable means goods sale on credit. Against that, the the, uh, the suppliers signing on the bill is called bill receivable. Loans given to employee, okay. Any loan is given to employee, it is recorded here. That we already discussed. Advance paid for purchase. Now sometimes you have to pay advance against purchase, and whatever we are paying against advance for purchase, that is recorded on balance sheet asset side. Expenses paid in advance. Any expense paid in advance of next year in current year is called expenses paid in advance. Okay, and that should be recorded in balance sheet asset side. Last one is now deferred revenue expenditure means advertisement expense. Suppose if you are giving advertise and suppose big amount is there, that should be divided into 3 or 4 years. Okay, so that should be recorded here. Balance sheet asset side. Okay. So now your balance sheet is finished. Okay. Now next heading is now adjustment. Okay. In adjustment, first one is now closing stock. Okay. So closing stock have two effects. First of all, balance sheet credit side, sorry, trading account credit side and balance sheet asset side. Okay.
So closing stock is always record on trading account, credit side, and balance sheet, asset side. Okay. So each and every adjustment has two effects. Okay. More than uh, two or more than two. Okay. So every adjustment has two or more than two effects. Okay. So first one is now closing stock. Okay. First one is now closing stock. So closing stock is always have uh, two effects. First one is now trading account, credit side, and second one is balance sheet, asset side. Okay. After that, outstanding expenses. Outstanding expenses. Okay. So outstanding expense has a two effects. First one is now add to expense. Okay. First one is now add to expense, and the second one is you have to balance sheet liability side. Okay. Balance sheet liability side. So outstanding expense you have to record expenses record on two sides. Okay. Trading account debit side and profit and loss account debit side. Okay. If the trading account expenses are outstanding, then record in trading account, and second effect balance sheet liability side. And if expenses of profit and loss account is outstanding, then first effect record on PL account debit side, and second effect बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। ओके, इसका मतलब यह है कि भाई जो एक्सपेंस है वो दो साइड रिकॉर्ड होता है। ओके, परचेस का एक्सपेंस हो तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है, वो पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। और पीएल का जो एक्सपेंस है, एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ओके, फाइनेंशियल कॉस्ट, दैट शुड बी रिकॉर्ड पीएल अकाउंट डेबिट साइड, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड नहीं होता है। ओके, सो आपको देखना है कि कौन सा एक्सपेंस है, ट्रेडिंग का एक्सपेंस है या प्रॉफिट एंड लॉस का है। ओके, तो ट्रेडिंग का हो तो आपको ट्रेडिंग में ऐड करना है वो एक्सपेंस। ओके, और पीएल प्रॉफिट एंड लॉस का हो तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ऐड करना है। सो फर्स्ट इफेक्ट आपको यहाँ पे देनी है, और सेकंड इफेक्ट आपको देनी है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड इन बोथ द केसेस। ओके, चाहे वो ट्रेडिंग का हो चाहे वो पीएल का हो, सेकंड इफेक्ट शुड बी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके, बराबर। नेक्स्ट वन इज नाउ प्रीपेड एक्सपेंस, जो एक्सपेंस आपने एडवांस में पे किया हुआ है। ओके, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंस आपने एडवांस में पे किया है, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, सो वो एक्सपेंस आपका ट्रेडिंग का भी हो सकता है और प्रॉफिट एंड लॉस का भी हो सकता है। ओके, ट्रेडिंग का एक्सपेंस है तो आपको ट्रेडिंग में से माइनस करना है। ओके, जो एक्सपेंस जो है उसमें से माइनस करना है। पीएल का हो तो पीएल में फर्स्ट ऑफ ऑल इनर कॉलम में लिखना है, उसमें से माइनस करना है। ओके, तो फर्स्ट इफेक्ट आपका होगा ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट, एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके, क्योंकि ये क्या है आपका प्रीपेड एक्सपेंस है। एक्सपेंस कौन सा है? प्रीपेड एक्सपेंस है। ओके, तो जब भी एक्सपेंस आप प्रीपेड करोगे तो आपको माइनस ही करना है। ओके, सो एक्सपेंस में से वो माइनस होगा, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, नेक्स्ट वन इज नाउ इनकम रिसीवेबल। नेक्स्ट वन इज नाउ इनकम रिसीवेबल, यानी करंट ईयर का आपका जो इनकम है जो आपको मिला नहीं है। ओके, करंट ईयर का जो इनकम है वो आपको मिला नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनकम रिसीवेबल। सो फर्स्ट इफेक्ट पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड, सो देयर इज ओनली वन चॉइस, पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, तो उसका सेकेंड इफेक्ट होगा आउटस्टैंडिंग इनकम का आपका बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके, नेक्स्ट वन इज नाउ इन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जो नेक्स्ट ईयर का इनकम है आपको करंट ईयर में मिला है। ओके, नेक्स्ट ईयर का जो इनकम है वो आपको करंट ईयर में मिला है, दैट इज कॉल्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज रिकॉर्ड on balance sheet liability side. Okay, and second effect minus from income PL account credit side. Okay, minus from income PL account credit side. So first effect minus from income PL account credit side, and second effect balance sheet liability side. Okay, तो जो इनकम आपको एडवांस में मिला है दैट इज नॉट इनकम फॉर द करंट ईयर,
That's why it should be minus from income, PL account, credit side. Okay. Next one is now interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो भी आपको कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है ओके, तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा ओके. सो इंटरेस्ट कैपिटल इज इनकम फॉर द ओनर एंड एक्सपेंस फॉर सॉरी एक्सपेंस फॉर द फर्म ओके. इट इज इनकम फॉर द ओनर एंड expense for the firm okay. So interest capital is record on profit and loss account credit side okay, and second effect you have to add to capital okay, that is record on balance sheet left side, add to capital. कैपिटल में आपको ऐड करना है और आपको सेकंड इफेक्ट देनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नेक्स्ट वन इज नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. नेक्स्ट वन इज नाउ interest on drawing. So interest in drawing is a expense for the owner and income for the firm. Okay, so that's why interest on drawing it's record on profit loss account credit side. Okay, and it is a record on balance sheet liability side minus from capital. Okay. Minus from capital. Interest on capital is record on PL account debit side, and interest on drawing it's record on PL account credit side. So both are the opposite. Interest on capital is a expense for the firm and income for the owner, and interest on drawing is a expense for the owner and income for the firm. So that's why interest on drawing is record on credit side of PL account credit side, and interest on capital is record on debit side of profit and loss account. Next one is now depreciation on assets. Okay. Depreciation on assets. Okay. So depreciation on assets, first effect PL account debit side, and second effect balance sheet asset side minus from assets. Okay. In case of two assets, a factory building and plant and machinery, it's record on trading account debit side. Okay. Depreciation of factory building and plant and machinery, it is record on trading account debit side, and rest of the assets depreciation is record on profit and loss account debit side. Okay, and second effect balance sheet asset side minus from assets. Okay. Now bad debt. Okay, so now uh, in case of bad debt. Okay, so bad debt, BDR, and discount zone debtors. Okay, all the three adjustments always record together. Okay, तो ये तीनों एडजस्टमेंट आपको एक साथ ही करनी है, तो उसका फॉर्मेट भी अलग है. सो इन पीएल अकाउंट डेबिट साइड, इफ यू टॉक अबाउट bad debt adjustment, then first of all you have to record bad debt old. Old means trial balance plus bad debt new means adjustment plus bad debt reserve new as per adjustment. तीनों को प्लस करना है और नीचे लिखना है अमाउंट माइनस बैड डेट रिजर्व ओल्ड. तो जो ट्रायल बैलेंस में दिया है बैड डेट रिजर्व ओल्ड वो माइनस करना है और माइनस करके बाहर आउटर कॉलम में आपको अमाउंट लिखनी है. दिस इज द इफेक्ट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट साइड. सेकंड इफेक्ट यू टू रिकॉर्ड ऑन बैलेंस शीट एसेट साइड. सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगा? बैलेंस शीट एसेट साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल द रिकॉर्ड द अमाउंट हियर, दैट इज द डेटर्स. ओके, तो डेटर्स आपको क्या करना है? पहले लिखना है डेटर्स. ओके, मानसी अपना माइक बंद करो बेटा. ओके, सो बैलेंस शीट 2 मिनट में आपका पहले डेटर्स ले लेता हूँ. So here we are talking about bad debt. Okay. So first effect, that is the profit and loss account debit side, bad debt old plus bad debt new plus BDR new. तीनों को प्लस करना है माइनस BDR old, जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वो माइनस करना है. वो माइनस करके आपको बाहर आउटर कॉलम में अमाउंट लिखना है. दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट. सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, डेटर्स जो है सबसे पहले डेटर्स लिखना है, उसके बाद प्लस unrecorded credit sales.
जो क्रेडिट सेल्स इसमें ऐड नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट सेल्स ऐड कर दो। जो बुक में नहीं दिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बराबर है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स जो आपको दिया है एडजस्टमेंट में, तो सबसे पहले आपको अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स ऐड करना है, उसके बाद ही आपको माइनस बैड डेट करना है। ओके, तो ये चीज आप याद रखना, दिस इट इज नॉट गिवन इन टेक्स्ट बुक। ओके, सो फर्स्ट सबसे पहले आपको डिटेल्स लिखना है प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स। जो क्रेडिट सेल्स अभी जो न्यूली हुआ है, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो आपको रिकॉर्ड करना है ऐड टू द डेटर्स। ओके, उसके बाद ही आपको बैड डेट माइनस करना है, बैड डेट एडजस्टमेंट। ओके, सो माइनस बैड डेट एडजस्टमेंट माइनस बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट माइनस डीआरडी एडजस्टमेंट। ओके, और ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये तीनों ऑर्डर में होना चाहिए। सबसे पहले माइनस बैड डेट करना है, उसके बाद ही आपको बैड डेट रिजर्व माइनस करना है, उसके बाद ही आपको डिस्काउंट रिजर्व डेटर्स माइनस करना है। ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आप डीआरडी माइनस कर दिया उसके बाद बैड डेट माइनस किया। इट शुड बी इन ऑर्डर। ओके, तो आपको सबसे पहले बैड डेट माइनस करना है, उसके बाद बीडीआर माइनस करना है, उसके बाद ही आपको डीआरडी माइनस करना है। ओके, बराबर। सो नेक्स्ट इफेक्ट फॉर डीआरडी पीएल अकाउंट डेबिट साइड, तो उसका भी फॉर्मेट अलग है। डिस्काउंट अलाउड, ओके, व्हिच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, प्लस डीआरडी एडजस्टमेंट। जो डीआरडी आपको दिया है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स एडजस्टमेंट दिया है, वो इसमें ऐड करना है। उसके बाद माइनस डीआरडी एज पर ट्रायल बैलेंस। तो जो डीआरडी आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, वो आपको माइनस करना है, और वो माइनस करने के बाद अमाउंट आपको बाहर लिखना है। ओके, तो ये हुआ आपका बैड डेट रिजर्व और डीआरडी, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज नाउ एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुड्स अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज। ओके, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, आपने क्रेडिट परचेज किया है, गलती से वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ओके, सो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज को पहले परचेज में ऐड कर दो। ओके, परचेज में सबसे पहले ऐड कर दो, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लेफ्ट साइड ऐड टू क्रेडिटर्स। ओके, ऐड टू क्रेडिटर्स। ओके, तो आपको क्रेडिटर्स में ऐड करना है, और सेकंड आपको ऐड करना है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ओके, ऐड टू परचेज। ओके, so next is now adjustment, that is a unrecorded credit sales। Okay, unrecorded credit sales जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल add to sales ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेल्स में ऐड करना है, और सेकंड इफेक्ट आपकी होगी बैलेंस शीट एसेट साइड add to debtors। Okay, next one is now unrecorded credit purchase return। Okay, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न। ओके, तो सबसे पहले परचेज रिटर्न में ऐड कर दो, और बैलेंस शीट डेबिट साइड आपको क्रेडिटर्स में से माइनस करना है, क्योंकि जो आपने परचेस किया था क्रेडिट में, उसको अभी वापस दे दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स का जो पेमेंट है वो कम हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपने क्या किया, उसको परचेज रिटर्न किया है इसलिए। ओके, सो परचेज क्या होगा, आपका माइनस हो जाएगा परचेज में से, सो आपको क्रेडिटर्स में से माइनस करना है। ओके, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न। ओके, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न, तो आपको क्या करना है, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ सेल्स रिटर्न, तो रिकॉर्ड कर दो सेल्स रिटर्न में। ओके, सो ऐड टू सेल्स रिटर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड टू सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, उसके बाद आपको डेटर्स में से माइनस करना है अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न। ओके, रिटर्न हुआ है, तो आपका डेटर्स का जो पेमेंट है वो भी कम हो जाएगा। ओके, तो जो आने वाला पेमेंट है वो कम हो जाएगा, सो इसलिए आपको डेटर्स में से माइनस करना है। ओके, नेक्स्ट वन इज नाउ गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज एंड द सेम इज नॉट रिकॉर्डेड। गुड्स विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, गलती से उसको रिकॉर्ड नहीं किया। ओके, बराबर। सो फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड माइनस फ्रॉम परचेज। ओके, गुड्स विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, तो रिकॉर्ड हुआ नहीं है, तो परचेज में से माइनस करना है आपको,
So first effect, trading account debit side minus from purchase, and second effect, that is a uh, add to partners account. Okay, add to owners account. So drawing क्या होगा आपको, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। ओके, कैपिटल जो होता है, कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट कैपिटल, और लास्ट में जो ड्राइंग होता है वो माइनस होता है उसमें से। सो गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग में ऐड करना है और कैपिटल में से माइनस करना है। ओके, ड्राइंग में ऐड करना है और कैपिटल में से माइनस करके अमाउंट बाहर लिखना है। ओके, गुड्स लॉस ड्यू टू थेफ्ट। ओके, थेफ्ट से आपको लॉस हुआ है। सो फर्स्ट इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड माइनस फ्रॉम परचेज, माइनस फ्रॉम परचेज। ओके, और सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लॉस ड्यू टू थेफ्ट। बराबर है, लॉस ड्यू टू थेफ्ट। तो सेकंड इफेक्ट क्या होगा, पीएल अकाउंट डेबिट साइड, लॉस ड्यू टू थेफ्ट। ओके, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट। ओके, तो ऐड के लिए आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, सो फर्स्ट इफेक्ट होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड माइनस फ्रॉम परचेज। ओके, सेकंड इफेक्ट, पीएल अकाउंट डेबिट साइड ऐड टू एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ऐड टू एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। तो आपको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट में उसको ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट वन इज नाउ गुड्स गिवन हैज डोनेशन, गुड्स गिवन हैज डोनेशन। ओके, सो डोनेशन में जो गुड्स दिया है, ओके, सो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे होगी, पीएल अकाउंट डेबिट साइड ऐड टू डोनेशन। ओके, और सेकंड इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड माइनस फ्रॉम परचेज, माइनस फ्रॉम परचेज। उसके बाद गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो फर्स्ट इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड माइनस फ्रॉम परचेज, और सेकंड इफेक्ट, लॉस बाय फायर पीएल अकाउंट डेबिट साइड, लॉस बाय फायर पीएल अकाउंट डेबिट साइड। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सपेक्टेड फुल क्लेम। ओके, अभी फुल क्लेम आपका पास हो गया है, आपने इंश्योरेंस लिया है। ओके, सो फर्स्ट इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड, इंश्योरेंस कंपनी जो आपको कैश मिला है। ओके, एंड सेकंड इफेक्ट, दैट इज अ परचेज minus from purchase. Okay, goods destroyed by fire. बराबर। So first effect, trading account debit side minus from purchase, and second effect, बैलेंस शीट एसेट साइड, इंश्योरेंस कंपनी जो आपको फुल अमाउंट मिला है। गुड्स डिस्ट्रॉय का। ओके, उसके बाद गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड पार्शियल क्लेम। ओके, अभी 10,000 का गुड्स है, उसमें से आपको 8,000 मिला है, 2,000 मिला नहीं। ओके, तो क्या होगा, फर्स्ट इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेस में से माइनस करना है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, अमाउंट होगा 10,000। ओके, आपको 2,000 का लॉस हुआ है, तो पीएल अकाउंट डेबिट साइड, लॉस बाय फायर 2,000। ओके, और 8,000 आपको चेक मिला है, तो आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके, इंश्योरेंस कंपनी अमाउंट इज 8,000। नेक्स्ट वन इज नाउ स्टेशनरी स्टॉक। ओके, नेक्स्ट वन इज नाउ स्टेशनरी स्टॉक। तो आपका जो स्टेशनरी स्टॉक है उसकी दो इफेक्ट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको स्टेशनरी में से माइनस करना है पीएल अकाउंट डेबिट साइड, स्टेशनरी में से माइनस करना है पीएल अकाउंट डेबिट साइड, और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके, सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके, नेक्स्ट वन इज नाउ कमीशन पेबल ऑन प्रॉफिट, कमीशन पेबल ऑन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट पे आपने कमीशन देना हो, दिया नहीं। ओके, सो फर्स्ट इफेक्ट होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, बराबर, और सेकंड इफेक्ट होगी बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। ओके, अनपेड कमीशन, कमीशन पेबल ऑन प्रॉफिट, जो कमीशन देना था वो आपने अभी दिया नहीं। ओके, बराबर। सो नाउ नेक्स्ट वन इज नाउ रिटर्न ऑफ proportionate part of leasehold building property. Okay, proportionate part of leasehold property. So here first effect,
बैलेंस शीट एसेट साइड, ओके, माइनस करंट ईयर लीज, और सेकंड इफेक्ट पीएल अकाउंट डेबिट साइड करंट ईयर लीज, ओके। एग्जाम्पल, कोई आपने जो प्रॉपर्टी लीज पे लिया हुआ है, सपोज 1 लाख पेमेंट इज मेड फॉर 10 years रेंट, ओके। 10 साल का रेंट 1 लाख है, आज के डेट में आपने 1 लाख एडवांस दे दिया उसको, ओके। तो क्या लिखना है आपको? बैलेंस शीट एसेट साइड लिखना है आपको इन द कॉलम में प्रॉपर्टी रेंट 1 लाख, ओके, बराबर। इसके बाद माइनस करंट ईयर रेंट 10,000, सो 1 लाख माइनस 10,000, तो बाहर लिखोगे अमाउंट 90,000। सेकेंड इफेक्ट होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ओके। करंट ईयर लीज दिखाना है आपको 10,000, ओके। करंट ईयर लीज दिखाना है आपको अमाउंट 10,000, ओके। सो नाउ नेक्स्ट वन, नाउ amount transferred to general reserve, okay. Amount transferred to general reserve. So first effect, profit and loss account debit side, okay. First effect, profit and loss account debit side, and second effect, you have to show um, balance sheet liability side, add to general reserve, okay. Add to general reserve. जनरल रिजर्व में आपको क्या करना है? उसको ऐड करना है, ओके। सो योर एडजस्टमेंट इज